हेलो स्टूडेंट्स, तो अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस along with their answers. This is the first video related to this chapter. I will try to complete this chapter in 3 videos. So let's begin. So the first question is define a plan. Plan क्या होता है? तो प्लान स्पेसिफाई करता है कि एक कंट्री के रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. तो प्लान में कुछ जनरल गोल्स भी होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए जो विद इन अ सर्टेन पीरियड अचीव होने चाहिए. इंडिया में हम 5 ईयर प्लान्स यूज करते हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वैसे अब 5 ईयर प्लान्स भी खत्म हो चुके हैं. लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 12th था, which covered the period from 2012 to 2017. उसके बाद 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में अब खत्म हो चुका है. बट हाँ, 5 ईयर डिफेंस प्लान्स अभी भी बनाए जाते हैं. So, a plan specifies how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ का जनरल गोल है टू बी अ हैप्पी पर्सन, टू बी अ गुड पर्सन, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि विद इन 1-2 ईयर्स हमें क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, हम जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाते हैं. सो सिमिलरली कुछ जनरल गोल्स होते हैं प्लान में और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो विद इन अ टाइम फ्रेम हमें अचीव करने हैं. The next question, why was it necessary for a developing country like India to follow self-reliance as a planning objective? तो जो first 7 5-year plans थे उनमें हमने self-reliance को बहुत importance दी, because obviously एक ऐसी country जो recently foreign domination से free हुई हो वो self-reliance को तो importance देगी ही. It is quite understandable. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other countries. तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं या तो हम खुद के रिसोर्सेज यूज करें या फिर हम इंपोर्ट करें बाहर की कंट्रीज से. Self-reliance means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. तो हम self-reliant होना चाहते थे कि हम जिन चीज़ों को यहीं पे प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका import ना करें. This policy was considered necessary in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. और हमें ये डर भी था कि फॉरेन से अगर हम टेक्नोलॉजी या कैपिटल भी लेंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी सॉवरेनिटी पे कुछ फर्क ना पड़ जाए उसका. सो ये बहुत ही आई थिंक अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है कि अ कंट्री दैट रिसेंटली गॉट फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन would give importance to self-reliance. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. So यहाँ sovereignty का मतलब है independence. So the next question is a fill-up. Equity in agriculture called for dash which refer to change in the ownership of land holdings. तो एग्रीकल्चर में बहुत इनइक्वालिटी थी. टिलर्स ऑफ द सॉइल को कुछ नहीं मिलता था, टिलर्स ऑफ द सॉइल को एक्सप्लॉइट किया जाता था. सो इक्विटी लाने के लिए लाए गए लैंड रिफॉर्म्स. सो द करेक्ट आंसर इज लैंड रिफॉर्म्स. व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? तो इंडिया में प्लान्स क्यों लाए गए? जैसे प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 1950 में और पहला 5-ईयर प्लान आया था 1951 में, covering the period from 1951 to 1956. प्लान्स लाने का मेन कारण तो ये था कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कंट्री की जो स्टेट थी वो बहुत ही बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी. कंट्री को कुछ ऐसे मीन्स की ज़रूरत थी जिससे एक पुश मिल सकता, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ हो सकती और हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो भी सस्टेन हो पाए, इसलिए प्लान्स बनाए गए. तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो ऑब्वियसली एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
जवाहरलाल नेहरू थे. The colonial government left India in a backward and stagnant situation. It was required to solve nation's problems in a sovereign Indian republic. Sovereign यानी independent, republic यानी यहाँ कोई king नहीं है, कोई monarchy नहीं है. Through a system of federal, जहाँ state और central government अलग है. Parliamentary democracy. Democracy तो आप समझते ही हैं, a representative which is elected by the people. Planning was opted to sustain political independence and generate economic prosperity by using our own resources efficiently and economically. तो जिस स्टेट में इंडिया थी जस्ट आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, तो वो बहुत बैकवर्ड थी और उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर बदलाव लाने की जरूरत थी और प्लान्स से हमने गोल्स बनाए. सो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स में, दैट इंक्लूडेड ग्रोथ ऑफ कोर्स, देन मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स. तो प्लान्स में गोल्स तो होने ही चाहिए. वो गोल्स जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, विच आर टू बी अचीव्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. Plans should have goals, general and specific, to be achieved in a specified period of time. In India, plans of 5 years duration are known as 5-year plans. Goals help in an overall growth of all the sectors of the economy. तो सिंपल है कि प्लान्स में टारगेट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. Then the next question is explain growth with equity as a planning objective. तो ग्रोथ का मतलब होता है कि जीडीपी बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में बढ़ रही है. बट इक्विटी का मतलब होता है कि इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है इकोनॉमी में. सो हमारा जो टारगेट था प्लान्स का वो सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रोथ विद इक्विटी का था. डेवलपमेंट तो हो बट विद सोशल जस्टिस हो. तो अगर ग्रोथ हुई है यानी कि टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा है, तो उसका जो बेनिफिट है वो सभी को मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए. Economic growth is an increase in the total output of final goods and services in a country in a given period of time. Equity refers to reduction in inequality of income or wealth, uplifting weaker sections of the society, and equal distribution of economic wealth. Higher levels of growth and equity are the main targets of India's economic planning. When these objectives are achieved, it will be development with social justice, which further means increase in per capita availability of goods and services. तो हर एक इंसान के लिए जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो, ना कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए. What is Green Revolution? Why and when was it implemented? So Green Revolution से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गई, स्पेशली वीट और राइस की, due to the use of HYV seeds, that is high yielding variety seeds. Green Revolution refers to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice. Wheat and rice. Why was it implemented? तो इंडिपेंडेंस के समय about 75% of the country's population was dependent on agriculture. और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर था, फार्मर्स अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे. तो फिर इस स्टेग्नेशन को ब्रेक करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द सॉल्यूशन. At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. Productivity in the agricultural sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers. India's agriculture widely depends on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had access to good irrigation facilities, which only a few had.
The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. Then, when was it implemented? तो ग्रीन रेवोल्यूशन फेजेस में लाया गया था क्योंकि इसके लिए हमें HYV सीड्स यूज करने होते थे, फर्टिलाइजर्स यूज करने होते थे, बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती थी, तो इट वाज नॉट वेरी इनएक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव ही था ये फार्मर्स के लिए, इसलिए फर्स्ट फेज ज्यादा स्टेट्स में नहीं फैल पाया, सिर्फ कुछ अफ्लुएंट स्टेट्स में ही उसका इफेक्ट देखने को मिला. The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizers and pesticides. As a result, in the first phase of the Green Revolution, approximately in the mid 1960s up to mid 1970s, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. Here, in the second phase of the Green Revolution, which was from mid 1970s to the mid 1980s, the HYV technology spread to a larger number of states and then it started benefiting more variety of crops. The spread of Green Revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. तो ये इसका एक बहुत ही important benefit है. We no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting our nation's food requirements. So Green Revolution really helped us in becoming self-sufficient when it came to food grains. What is a perspective plan? So perspective plan is another term used for long-term plans. Very simple, could be a 1-mark question. Then, why despite the implementation of Green Revolution, 65% of our population continued to be engaged in the agriculture sector till 1990? तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल, स्टिल इतने सारे लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे क्योंकि बाकी के सेक्टर्स दैट इज द सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर इतनी अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट नहीं कर पा रहा था फॉर पीपल. 65% of our population continued to be engaged in the agriculture sector till 1990 despite of the implementation of Green Revolution. The reason being that the industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the overcrowded agricultural sector. ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, but I still wanted to discuss this. Distinguish between planning objectives and plan objectives. लगता है कि ये ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं हम टर्म्स, बट ऐसा नहीं है. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और प्लान ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. जैसे लॉन्ग पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे थे ही ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, और जो शॉर्ट पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर में फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कुछ बन गए उस पीरियड में डील करने के लिए सिचुएशन से. तो जैसे वॉर के बाद इन्फ्लेशन हो गई, फिर हमारा फोकस प्राइस स्टेबलाइजेशन पे हो गया. तो प्लान ऑब्जेक्टिव्स मतलब उस पर्टिकुलर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, सेकंड 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स की ओवरऑल जो हमारी लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे. दे आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. दे आर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन शॉर्ट पीरियड. दे आर ब्रॉड गोल्स which development plans seek to achieve. They are planned with greater precision. मतलब बहुत ही डिटेल में ये प्लान्स बनाए जाते हैं जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो शॉर्ट पीरियड में अचीव करने हैं, जो उसी पर्टिकुलर प्लान में अचीव करने हैं. They are common to all the plans. They vary from plan to plan. These aim at structural changes. They aim at quantitative changes. So ये इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और ये क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं कि अभी लेट्स से इतने स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश हो जाने चाहिए, अभी इन्फ्लेशन इतने रेट से कम हो जानी चाहिए. सो क्वांटिटेटिव चेंजेस.
So I hope this video helped you. I'll cover all the NCERT questions from all the chapters. Thank you so much for watching.